Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Sorry about the last class. I was not feeling well. The lost time will be covered, inshallah, as soon as possible. Uh, Let me begin with the look back at the definition of convergence of sequence and the Cauchy criterion or Cauchy sequence. We say that an infinite sequence is said to converge to a real number L if for every epsilon there exists a positive integer m such that all terms of the sequence are in a small neighborhood of the point L, except for the first m term. In this case, we also say that the sequence has a unique limit and write the fact as limit n approaches infinity f s n is equal to L. So whenever we choose a small positive real number epsilon, we can find what terms are outside this neighborhood of L, and this fact will be used to in the demonstration of examples solved that I had started last Thursday, that we met. Cauchy criterion or a Cauchy sequence when for every epsilon positive for a given infinite sequence, there exists a positive integer m such that after m terms, all terms are such that if you choose any two of the terms that appear after first m terms, the difference between them will be less than the chosen small number epsilon. In this, we want to restate this. We can also write it like this: after whenever you choose an epsilon, after some terms, every two consecutive terms or every two terms that you choose are very, very close to each other. So on the basis of these, we'll be considering a problem solving procedure. I will demonstrate solutions of examples as well as some exercise. So let me begin with that where I started last time. And I started last time here. Interesting solved problems. We have to show that the limit as n approaches infinity of this sequence, this is Sn, general term of the sequence is 2. Now, classically, what we do at intermediate level or earlier level of studying calculus, we do some algebra on the given formula of the general term of the sequence, simplify it as much as possible, and apply limit n approaches infinity so that this number 3 upon square root n becomes 0, and what we are left with is 2. Now, this is the classical procedure, but if we want to demonstrate what's the meaning of convergence, then we have to look back at the definition of convergence, which says that for every epsilon, you can find a positive integer m
so that Sn minus the limit is less than epsilon. So I replace Sn by this formula. Uh, and Sn minus 2, that is a formula for the general term minus 2, do some algebra and simplify this as much as possible. And this simplification tells me that epsilon is less than, epsilon is greater than this number. If I solve this inequality, then I reach the criteria that whatever epsilon you choose, n should be greater than 9 upon epsilon square. Now this will tell me the value of n. According to this criterion, the smallest m, the integer greater than or equal to this number, is the m of the definition of convergence. So if I use epsilon, say 0.01, 9 upon 0.01 squared gives me 90,000. So if I choose epsilon to be 0.01, this statement Sn minus 2 is less than 0.001 will be true for all such terms except for the first 90,000 terms, which is of course a finite number of terms. And if I choose epsilon to be 0.01, then 9 upon 0.01 square is the number 900. So in case epsilon is taken 0.1, then Sn minus L will be true for all n except for the first 900 or so terms. So this is the way we use the idea of the definition of convergence, at least to find out how many terms remain outside this neighborhood of 2 whenever I choose some epsilon. Let us consider this another example. For any a positive greater than 1, limit a raised to power 1 upon n is 1. Now this is a simple known fact that if you choose a number greater than 1 and keep on taking roots, square root, cube root, third root, fourth root, fifth root, hundredth root, ultimately when n is sufficiently large, the root of any positive number greater than 1 will ultimately reduce to 1. You can repeat this using your calculator. A को चूज कर लें कोई, फॉर एग्जांपल 5 चूज कर लें, 5 का स्क्वायर रूट लें, जो रिजल्ट आए, तो 5 का क्यूब रूट लें, 5 का फोर्थ रूट लें, वालेकुम सलाम। तो अल्टीमेटली 5 के जो nth रूट्स हैं स्मॉलर स्मॉलर होते चले जाएंगे, मगर 1 से कम नहीं हो सकते. So you can say that the limit of this sequence is 1. But let us use epsilon and m procedure. So Sn minus L, L is 1, Sn is this, is less than epsilon. And let us work it out. अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं 1 minus epsilon 1 plus epsilon में, तो क्या होगा? 1 plus epsilon, if I consider that, no, here what I've done is that a power 1 upon n 1 से बड़ा है, क्योंकि a 1 से बड़ा है. अब 1 से कितना बड़ा है? It depends on the value of n. For example, अगर ये 5 है, तो 5 का मैं 7th रूट लूँ, तो अब 7 पे डिपेंड करेगा कि a 5 raised to power 1 upon 7 ये 1 से कितना बड़ा है. That is why I have written Hn. Hn is positive, so Hn can be written in this form. This is the equation. So when I write it in this form, the original form is this. यहाँ पे nth power ले लूँगा दोनों sides की. So I will have this thing. Binomial
expansion, finite binomial expansion. So 1 plus nh plus n minus n into n minus 1 upon 2 factorial hn square and so on up to hn raised to power n. सर मुझे वाली बात समझ में नहीं आई। कौन सी वाली? ये आपने HN क्यों लिया है? देखें, जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या लिखते हैं? L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन। अभी मैंने वो प्रोसीजर शुरू नहीं किया, लेकिन मैंने ये कहा कि अगर मैं a पावर 1 अपॉन n लूँ वेयर a इज ग्रेटर देन 1, तो a पावर 1 अपॉन n 1 प्लस कुछ होगा ना जी। नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट 1 प्लस कुछ जो है दैट विल डिपेंड ऑन n। 5 का अगर मैं 7वां रूट लूँ तो यू कैन फाइंड 1 प्लस समथिंग। अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लो, अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लो। 5 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 7 इज 1 प्लस हाउ मच? और 5 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 100 1 प्लस कितना है? तो वो एच एन जो है इस्तेमाल किया मैंने, इसकी पावर एन ली और बायनॉमियल एक्सपेंशन से उसको नहीं लिख दिया। Now, if you work out 5 raised to power 1 upon 100, you will see that hn is a small number. It's not a large number. So I take squares, cubes of small numbers, and they will be negligible, and I consider only this part. But when I drop all these terms, this equation will no more be an equation. It will be an equality. This part is greater than this part. So 1 upon 1 plus h n raised to power n will be greater than 1 plus n h n, as hn is positive, neglecting higher degree terms of hn. Now, this is in fact representing a. A is equal to this. So a is in fact greater than this. And I solve it for hn, and I find that hn is less than a minus 1 upon n for every positive integer. I can introduce hn in absolute, and since positive numbers are dealt with, it is same. Now I call this number epsilon because hn from here, it is a power 1 upon n minus 1. And we had to show that the limit of a power 1 upon n is 1. So Sn minus L is less than epsilon. And since a power 1 upon n minus 1 is nothing but Hn, which is less than a minus 1 upon n, so we come out with the result that Sn minus L will be less than epsilon for all n greater than a minus 1 upon epsilon, which will be which may not be an integer. I should have written here that integer next to this, which simply say that indeed this converges to 1 for all n greater than m, which is numerically either a minus 1 upon epsilon or a little greater than that. So here I have considered an example, a is equal to 5. If I consider epsilon to be 0.01, तो n कितना आएगा? 5 minus 1. A is equal to 5. 5 minus 1 upon 0.01, that is 400 terms. Similarly, if I change A to some other number, I take same epsilon, I will get another number. This number defines the size of the neighborhood of the limit that we are considering. And this number defines how many terms are outside this neighborhood of 1, whose size is this. Now, studying such examples make you understand. सर ये जो लास्ट पार्ट के अंदर आपने जो निगलेक्ट किए हैं सर, जो ये लार्जर टर्म्स को, सर आपने निगलेक्ट क्यों किया हाई डिग्रीज को? I just said that कि आप अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और a की जगह 5 रखें, n की जगह 10 रखें. Now, 5 raised to power 1 upon 10 will be some number greater than 1. How much greater?
and it will be only a small number, 1 plus small number. क्या मैं करके दिखाऊं आपको, या आप अपने कैलकुलेटर पे कर लेंगे? कर लेंगे ना. So hn comes out to be small when n is very large. So when I consider 1 plus hn whole raised to power n और बायनॉमियल से इसको एक्सपेंड करूं, तो सिग्निफिकेंट टर्म्स जो है वो सिर्फ पहली दो हैं. बाकी में स्मॉल नंबर्स का स्क्वायर, स्मॉल नंबर का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, स्मॉल नंबर का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ऑल दीज टर्म्स आर नेग्लिजिबल. For n very very large, these terms can be neglected. अच्छा, आपका जो क्यों है इसका एक एस्पेक्ट और भी है. वो क्यों ये है कि we are trying to construct things to demonstrate the role of epsilon and the role of integer. Epsilon का रोल क्या है? जिस पॉइंट पर हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, एप्सिलॉन का रोल है उसके गिर्द एक नेबरहुड बनाना, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन. और इस मैनिपुलेशन के जरिए मैं a पावर 1 अपॉन n माइनस 1 को थ्रू दिस स्कीम कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ऐसा कि this number comes out to be less than some number, and that number is a minus 1 upon n, which I consider to be some number smaller than epsilon. And I can assume that for a large n, this has to be a small number. अगर a 5 है और n जैसे मैंने demonstrate किया है a 5 है और epsilon 0.01 है, तो 5 minus 1 upon 0.01 is number 400. So for epsilon 0.01, I come to find that n should be exceeding 400. Then the first 400 terms will be outside this neighborhood, and all the rest of the terms will be inside this neighborhood. So that is the reason of neglecting this part. One reason is that hn is small, so its powers are small, so they can be neglected. The other reason is that I am going to construct the things the way I want. I hope it is clear. Now, limit n approaches infinity of n raised to power 1 upon n. The problem is treated in exactly the same way. When n is very large, for example, 100 raised to power 1 upon 100, and you find that it is only slightly larger than 1, and 1 plus hn, and hn is again a small number, same treatment is given, and I hope you can follow that yourself. And here epsilon की फॉर्म जो आई वो डायरेक्टली hn की वैल्यू जो है वो हमने अब के मैंने कहा तो एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट है. यानी पहले बायनॉमियल कंस्ट्रक्ट किया, बायनॉमियल कंस्ट्रक्ट करने के बाद I wanted to construct something that can be used as an epsilon. तो अब के मैंने क्या किया कि I considered this term. Now, when I look at this term, hn is small, hn square will be still smaller, divided by 2 factorial, and I'm claiming that this number will be less than the integer n used. Now, again, I can demonstrate this using numbers, and you can use numbers yourself. For example, you consider 100 here, 100 here, calculate hn, and then use that hn to construct 100 into 99 divided by 2 into hn square, and you'll find that this will be less than 100. So that makes hn square is equal to 2 upon, यानी n cancel कर दिया इस inequality में से, hn square becomes this, hn becomes this. For every n greater than or equal to 2, because denominator is n minus 1. तो अब ये n equal to 1 से शुरू नहीं होगा, n greater than 2 से शुरू होगा. तो हमने कहा कि hn क्योंकि लेस देन इसी को हम एप्सिलॉन ले लें. So epsilon is in fact greater than this number. So once we have constructed for each epsilon,
this will be less than epsilon whenever n exceeds m. And what m we have reached at, any positive integer just greater than 1 plus 2 upon epsilon square because of this construction. So choose epsilon and calculate the number m. Epsilon 0.01 or 0.1 clearly you will get 201. So exceeding this number is 202. So in these examples, what we are trying to demonstrate that we can construct epsilons, and from epsilons we can find out how many terms will remain outside the neighborhood that is made by epsilon around the limit L, whatever limit we are dealing with. यहाँ लिमिट 1 थी, अराउंड 1 जो भी मैं नेबरहुड बनाऊंगा एप्सिलॉन से, सारी टर्म्स लाइक n raised to power 1 upon n inside that neighborhood होनी चाहिए, except for the first m terms. So here we are demonstrating कि epsilon choose करके हम m कैसे calculate कर सकते हैं. The same technique is used for proving that geometric series. I hope you remember this geometric series. R plus R square plus R cube. Common geometric series या geometric progression जो तुम लोग पढ़ते थे वो A plus AR plus AR square plus AR cube type का होता था. But this is similar, starting with the R, then R square, then R cube. This is sequence. और हम कहा क्या क्लेम कर रहे हैं कि ये कन्वर्ज करेगा if and only if the value of R is more than -1 but less than or equal to 1. So there are a few cases that we can deal with separately. For R greater than 1, we consider R to be 1 plus H. That means H is a positive number. R exceeds 1. We use the binomial expansion. We leave out higher degree terms. So R raised to power n is greater than 1 plus nh for all n. Now choose G to be large number. Remember, we have to prove that for R greater than 1, we have the sequence converges between -1 and 1, and greater than 1 it should diverge. So हम जिस construction में पहुंचे हैं, Rn is greater than 1 plus nh. And now we are assuming that G is a positive large number, so that 1 plus nh is greater than G. So n is what? G minus 1 upon h. N is greater than G minus 1 upon h. And m is an integer exceeding this. G minus 1 upon h. Now, R raised to power n is equal to 1 plus h raised to power n. We found that this thing is greater than 1 plus nh, and G is still greater than that. So for every large number G, there is an integer such that Rn is greater than G. So this time, what we are doing, we are not finding epsilon. We are finding a number, large number, so that sequence terms are still larger than that. And the best thing is, and that means when sequence terms are larger than the largest number you have chosen, and that means the sequence is divergent. Again, you consider some number, R की value को choose कर लो, 5 choose कर लो, और G की कोई value assume कर लो, G large 1 million assume कर लो. So you can work out what power of number you choose for R will exceed 1 million. और वैसे भी हमें पता है कि if R is greater than 1, the powers of R will keep on increasing. But this is an analytical proof of that same thing, that R raised to power n diverges when R is greater than 1. What happens if R is equal to 1? Our common practice, 1 raised to power n, the limit is 1.
So you say that r is equal to 1 पे sequence converge कर रही है. Sequence is 1 comma 1 comma 1 comma 1. So for whatever epsilon you choose, the neighborhood of 1 contains infinitely many terms that are 1 themselves. So it is convergent. What happens when you consider the value of r less than 1? This time what we do, to make a number less than 1, note that what structure has been used. You choose a positive number h. 1 upon 1 is equal to 1. You want to make 1 upon something which is less than 1. So 1 denominator के 1 में कुछ ऐड कर दो थोड़ा सा. If for example मैं कह रहा हूँ a number less than 1 is half. So that is what? 1 upon 1 plus 1. Okay. You can also use r to be any other number like 0.9. 0.9 is what? If you want to write down 0.9 as 1 upon something, what you will get? कागज पे कैलकुलेट करके बताओ मुझे. 0.9 is equal to 1 upon 1 plus h. h की वैल्यू निकाल के दिखाओ. I repeat, r is equal to 0.9 layer. Considering r is equal to 0.9, equate it to 1 upon 1 plus h, cross multiply, and find out the value of h. .11. So h is a small number. Okay. This time we have to work out again r is to power n. तो इसकी पावर n लें और डिनोमिनेटर के अंदर अब आप बायनॉमियल लगाएं. जब आप डिनोमिनेटर बायनॉमियल लगाएंगे तो फिर वही हमने टेक्निक इस्तेमाल की कि ये हायर डिग्री टर्म्स ऑफ h क्योंकि h स्मॉल नंबर है छोड़ दिया. बट नाउ दिस स्ट्रक्चर विल बी लेस देन इक्वल टू दिस, क्योंकि अब डिनोमिनेटर कंप्लीट डिनोमिनेटर के बजाय आपने सिर्फ पहली दो टर्म्स लिखी हैं तो डिनोमिनेटर इज स्मॉलर. सो द नंबर resulting should be greater for every integer. Now look at this. Rn is less than or equal to this. अच्छा जरा चूज करेंगे 1 upon 1 plus nh को अगर मैं less than epsilon कंसीडर करूं, so what structure I get? I get this structure. One upon 1 plus nh is less than epsilon लिया. That means reciprocal किया तो 1 upon epsilon becomes smaller than 1 plus nh. That means 1 upon epsilon minus 1 is less than nh, and ultimately n is greater than this structure. This divided by h. So let m be some number such that belongs to the set of natural numbers, such that ये m जो है इस number से बड़ा है. That means we have in a position to write down mod r raised to power n is less than 1 upon 1 plus nh, जिसको हमने less than epsilon assume किया for each n greater than m, and that m is greater than this. Now, can anybody tell me that sequence r raised to power n when r is less than 1 converges to what number? My question is you start with, say, r is equal to 0.9 and start taking the powers. 0.9 raised to power 1, 0.9 raised to power 2 is 0.81. 0.9 raised to power 3, 0.9 raised to power 4, 0.9 raised to power 100, 0.9 raised to power 1000
Use your calculator and see what are the results. For example, 0.9 raised to power 10,000. And you'll find that it is very, very small. That means this r raised to power n is approaching 0. That is why here Sn minus L is not written, because L is 0. But what we have reached at is that mod r n minus 0 is less than epsilon for every n greater than m, which is greater than this structure. So choosing epsilon, you can find out this number. Of course, to exactly find this number, you need to have h also. But here it is not a computational work. I talk about few computations to make some points clear. But here it is sufficient k mod r raised to power n is less than some small number whenever n is greater than some integer, and that integer is greater than what structure according to this proof is this. What about r is equal to -1? R is equal to -1 से जो sequence generate होगी वो -1 + 1 -1 + 1, 2 limits, and that means the divergence of r raised to power n. And what if r is less than -1? So r can be chosen as -t, where t is a positive number. So Rn means -1 raised to power t. That means -1 raised to power n, t power n. This is an alternating sequence. And for oscillating between larger and larger real numbers, because r is less than -1, like -1.5 or -10 or -100. So when r is a negative real number less than -1, we get an oscillating behavior of the sequence. The number will become larger and larger, one positive, one negative. So again, we have a divergence to positive infinity and negative infinity. With this discussion, I hope these are solved examples you can find in the book. If you don't have the book, the complete book ने जो steps किए हैं उससे मैंने कुछ ज़्यादा ही steps किए हैं. So if you find something tricky, and there will be, of course, everywhere, like in this, मैंने बायनॉमियल लगाने के बाद बायनॉमियल की जनरल टर्म उठाई है यहाँ पे. बायनॉमियल की जो ये जो मैंने लिखा हुआ है a plus 1 plus a raised to power n, this is not is equal to this, rather it is equal to sum of this. So ये थोड़ी सी मुझसे लिखने में mistake हो गई. I should have written that it is like sum of all these terms. R is equal to 0 and NC 0 is 1, so a power 0. So 1 से शुरू होगा, R is equal to, and that makes NC, R is equal to 1. NC1 is n, a raised to power 1. So 1 plus a plus blah blah blah, binomial coefficient is. तो इसमें से जनरल टर्म जो है वो NCR a पावर है. दिस इज जनरल टर्म. और इस जनरल टर्म के साथ किस तरह से खेला हूँ मैं, यानी इन तमाम टर्म्स में से आप किसी एक टर्म को फिक्स ले लीजिए तो रिजल्ट जो है वो क्या होगा. दैट इज dealt with in this proof. I want you to explore it yourself, try to understand this. Look at this example. This is a simpler one. Sn is 2n minus 3 upon n plus 1. हमारा क्लासिकल मेथड क्या है कि हम n कॉमन लेते हैं, ऊपर नीचे से कैंसिल कर देते हैं और n अप्रोचेस इन्फिनिटी लगा के लिमिट निकाल लेते हैं. लिमिट 2n minus 3 upon n plus 1 is equal to. मगर इतने सिंपल प्रॉब्लम को भी अगर आप एप्सिलॉन डेल्टा की लैंग्वेज में लिखना चाहें कि ये कन्वर्ज कर रहा है 2 पे, तो Sn minus 2, Sn लिखा, अलजेब्रा किया, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमने कहा दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. मॉड की वजह से नेगेटिव का असर ख़त्म हो जाएगा.
and you will find that n is greater than 1 plus 5 upon epsilon. इसका मतलब है एप्सिलॉन अगर मैं चूज करूं कोई तो n की वैल्यू क्या आएगी, like 51. So this statement is true with epsilon 0.1. Not for all integers, but after 51, 52, 51, 52 terms are outside this neighborhood. All the rest are inside this neighborhood. Now let's make things a bit more complicated. Sn is equal to this. This is a complicated thing. 1 plus 2 plus 3 up to plus n divided by n square, and we have to show that this is 1 upon n. Now classical method अगर मैंने इस्तेमाल करना है तो क्या करूं? Let me method होगा कि 1 plus 2 plus 3 plus till n divided by n square minus half is less than epsilon. दोबारा बोलो. सर जो सीरीज है सम हो रही है इक्वल्स माइनस हाफ नॉट लेस देन एप्सिलॉन. ये किसने कह दिया? अच्छा वो दूसरा वाला क्लासिकल मेथड बोल रहे हैं आप? क्लासिकल मेथड के लिए कह रहा हूँ. क्लासिकल मेथड जो ऊपर वाला जो सम है ना. अच्छा हाँ सर 1 upon 1 square 2 n square into n plus 1 upon 2 है ये. हाँ. Let me go to the whiteboard. सर 1 plus 2 plus 3 n जो है वो एक सीक्वेंस बनाता है, वो हाफ n minus 1 बनाता है, n plus 1 बनाता है, हाफ n plus 1. 1 plus 2 plus 3 plus n is equal to n plus 1 divided by 2. तो देखो ना, पहले 3 नंबर्स हैं, इनका सम 6 है, राइट? तो 3 into 4 12 by 2 6. So अगर I go with the classical method, I will treat that sequence, this sequence divided by क्या था वहाँ पे? n square. n square. Okay, perfectly all right. n square था. So this multiplied by 1 upon n square. तो मेरी क्लासिकल मेथड में यहाँ से मैं n कॉमन लूँगा, n स्क्वायर बनेगा, 1 plus 1 upon n बनेगा, divided by 2 into 1 upon n square cancels, n approaches infinity and I get 1 upon 2. ठीक है जी? मतलब इस क्वेश्चन पे जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, इस पर अगर मैं क्लासिकल मेथड लगाऊं तो 1 upon 2 निकल आएगी लिमिट. लेकिन क्लासिकल मेथड लगाने के बजाय हम फिर एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन और m डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. तो हमने न्यूमरेटर को लिखा कि डिनोमिनेटर तो एज इट इज है, न्यूमरेटर को लिखा n डॉट n इंटू n. अभी देखा है हमने कि ये न्यूमरेटर जो है ये n इंटू n प्लस 1 है डिवाइडेड बाई 2. तो अब अगर मैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 को कंपेयर करूं n इंटू n से, तो ये है n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2, और आई एम टॉकिंग अबाउट n इंटू n, that is n square. Which one is larger and which one is smaller? And I am talking about कि ये स्ट्रक्चर बड़ा है कि n स्क्वायर बड़ा है. अगर नहीं समझ में आ रहा है, इमीडिएटली एक नंबर चूज करो n की जगह. फॉर एग्जांपल 10 स्क्वायर 100 by 2 50 plus 5 55. तो n कितना लिया था? 10. ये आया 55 और ये आया 100. So which one is larger? 100. n square is larger than. n square. So let us see what we have done here. हमने कहा n square is larger. यानी इसकी जगह अगर मैं n into n लिखूं तो ये चीज छोटी होगी और ये चीज बड़ी होगी.
विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स लेस देन 1। ओके, नाउ लेट अस वर्क आउट Sn माइनस हाफ, जैसे कि मैं कन्वर्जेंस में करता हूँ Sn माइनस एल। मुझे देखना है कि लिमिट, क्योंकि L 1/2 दी हुई है, जिसको कि हमने वेरीफाई भी किया है अभी क्लासिकल मेथड से। तो अब Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन की लैंग्वेज में क्या होगा? तो उसकी लैंग्वेज में ये होगा। इसको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करेंगे और न्यूमरेटर में वही इसकी जगह n स्क्वायर रख देंगे। तो व्हाट डू वी गेट? एंड वी गेट दैट दिस इज this structure Sn minus half is less than this, which is equal to this, which is 1/2. That means this is less than half. For what n? For every n. इसका मतलब मुझे यहाँ पे m निकालने की जरूरत नहीं है, because this result which led to Sn minus limit is less than half holds for every n, because this structure is valid for every n. So you just work out n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. So for every term, and you get this structure less than half. So this is true for every n, and m you can say 1. Now we take only some of the odd numbers. Some of the odd numbers. How we deal with them classically. How we can deal with them classically. Have you ever dealt with the sum of first odd numbers? I leave this for your exercise. That sum of odd numbers, first n odd numbers, kya hoga? And the hint is that you have to deal with the sum of first n integers, even integers, and sum of first n integers. यानी तीन चीजें हैं. Sum of first n integers, sum of first n odd integers, sum of first n even integers, and see what you get. Anyways, what I have done here is that in place of I've considered this, and this is structure n into 2n minus 1 divided by n square, which can be written as थोड़ी सी गड़बड़ हुई है इसके अंदर. यहाँ पे n आना चाहिए, जिसकी वजह से 2 + 1 अपॉन n हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, and that becomes 2 minus epsilon greater than 1 upon m. थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई भी है. ये चीज़ जो है दिस शुड हैव बीन n into 2n minus 1 की वजह से ये n होनी चाहिए. Anyways, we'll find out that for such a sum, n is equal to 1 के लिए 1 upon 1 square, so 1 minus 1 is less than epsilon, whatever epsilon value is. For n is equal to 2, what do we get? 1 plus 3, 4 upon 4. So this is equal to 1. In fact, ये जो structure है, अगर आप गौर करें, first say few integers. What I'm talking about is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. What's the result? 4, 5, 9, 16, 25. How many integers I have taken? 5. Denominator was 5 n square, so 5 square. तो तुम 5 odd integers लो या 500 odd integers लो, this
this structure, this here, this structure will always result into 1. So Sn, every term is in fact 1. That is why the limit is 1. And 1 minus 1 is less than epsilon for every n. I have already mentioned that यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है. ये every n के लिए 2 आना चाहिए. Okay. Now some interesting things. मैंने आज डिस्कशन से पहले इस चीज़ से बात शुरू की थी कि भाई कन्वर्जेंस क्या है, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस, और इस डेफिनेशन 3.3 पर हम सारा काम करते रहेंगे. लेकिन हमने कॉची कन्वर्जेंस भी पढ़ी है, और कॉची कन्वर्जेंस क्या कहती है इसको भी हमने रिवाइज किया था. A sequence is a Cauchy sequence अगर या fundamental sequence कि you choose an epsilon, then you can find a positive integer m such that after this in positive integer m, यानी पहली m टर्म छोड़ दो, उसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से कोई 2 टर्म्स उठाओ, उनका डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन. Now this idea that you talk about L plus epsilon, L minus epsilon, and you're claiming that all terms are here, where Sm plus 1, Sm plus 2, they are all caged between L minus epsilon and L plus epsilon. बाहर जो हैं m टर्म्स हैं, S1, S2, चाहे वो S1 इधर हो, S2 इधर हो, ब्ला ब्ला, S1 इधर हो, S2 इधर हो, S3 बाहर हो, Sm तक बाहर है. अब अगर तुम एक एप्सिलॉन चूज करते हो, जैसे कि यहाँ हमने फिजिकली बनाया हुआ एप्सिलॉन, कोई भी सीक्वेंस की टर्म 2 उठा लो जो कि इनके बीच में है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा. अब तुम कहो कि भाई एक टर्म यहाँ से उठाएं और एक टर्म यहाँ से उठाएं, तो हमें नहीं पता कि एक टर्म यहाँ होगी, वी आर टॉकिंग आर्बिट्रेरीली. और मोस्टली हम मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस की बात कर रहे होते हैं, तो मोनोटॉनिक सीक्वेंस या तो डिक्रीजिंग होगी और डिक्रीज करके यहाँ पहुँचेंगे, इंक्रीजिंग होगी तो इंक्रीज करके यहाँ पहुँचेंगे. एनीवेज, अगर तुम कहते हो कि एक टर्म ये है विद इंडेक्स n1 और एक टर्म ये है विद इंडेक्स n2, तो इस वक्त जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके लिहाज से इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन तो इसका आधा है. तो इस वक्त जो इनका डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से बड़ा है. तो तुम्हें किसने कहा कि एप्सिलॉन की चॉइस जो है वो फिक्स है? यू कैन चूज अ डिफरेंट एप्सिलॉन. फॉर एवरी एप्सिलॉन यू विल फाइंड दैट not these 2 terms, some other 2 terms. That means n1 और n2 जो इंडाइसेस हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस तुम्हें एप्सिलॉन से बड़ा नजर आ रहा है, तो तुमने एप्सिलॉन ऐसा चूज करना है कि अब ये टर्म्स भी बाहर चली जाएं. हम बात कर रहे हैं सिर्फ उनकी जो कि अंदर रह जाती हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम होगा. कॉची का ये आइडिया जो है ये बहुत सारे प्रूफ्स करने के लिए बड़ा यूजफुल होता है. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ मैंने एक सीक्वेंस ली है विच इज अ सॉर्ट ऑफ ए प्रिपरेशन ऑफ गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ सीरीज. अच्छा, अब इसकी जो टर्म्स है वो कैसी हैं? अगर n = 1 लूँ तो इट विल बी ओनली 1.
n is equal to 2 no, the next term will be 1 plus 1 by 2. n is equal to 3 no, the next term will be 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3. अच्छा, हमने ये साबित करना है कि ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज नहीं कर सकती. In order to show that the sequence cannot converge, हम अब कॉची सीक्वेंस का क्राइटेरिया इस्तेमाल कर रहे हैं. एप्सिलॉन चूज किया हमने फॉर रीजन 1/2 और n की जगह m रखा और सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की जो टर्म्स ली हैं वो S2m और SM ली. ना SM मीन्स सम ऑफ इस सीक्वेंस का कौन सी टर्म जिसमें 1, 1/2, 1/3 अप टू 1/m है, जबकि S2m क्या है, उसके अंदर डबल 1, 1/2, 1/3, 1/m, फिर 1/m plus 1, 1/m plus 2 अप टू 1/2m. जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो कौन सी टर्म्स बचेंगी, ये वाली टर्म्स, बिकॉज दिस माइनस दिस, ये सब कैंसिल हो जाएंगी, ये बचेंगी. अच्छा, now out of these terms that are written here in the absolute sign, what is the largest of the term? Remember, m is an integer. Smaller the integer, this number is larger. Greater than the integer, this number is smaller. तो smallest integer यहाँ पे है और greatest integer यहाँ पे है, तो इसकी तरतीब ये होगी, यानी this is greater than 1/m plus 2, which is greater than 1/m plus 3, which is greater than next, which is greater than next, which is greater than 1/2m. अगर मैं इसमें हर जगह, यहाँ पे भी हर जगह 1/2m डाल दूं तो जो सम आएगा वो इस एक्चुअल सम से बड़ा होगा. छोटा होगा सर जी, कहिए साथ. छोटा होगा ना सर, एक्चुअल सम बड़ा होगा और दूसरा वाला छोटा होगा. एक्चुअल सम बड़ा है और जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है वो छोटा है. जी सर. हाँ, लिखा हुआ तो यही है, मैंने उल्टा कह दिया क्या? उल्टा कह दिया. अच्छा, एनीवेज ये लाइन जो है ये इस बात को श्योर बना रही है कि 1/2m सबसे छोटा है, और हर टर्म की जगह 1/2m डाल दिया तो ओरिजिनल सम बड़ा है और 1/2m रिप्लेसिंग एवरी टर्म एंड दैट सम विल बी स्मॉलर. अब ये कितनी टर्म्स हैं जो हमने ऐड की हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू m. ये m टर्म्स हैं टोटल, क्योंकि ये है 1/m plus m. The count of these terms is m. So that means m into 1/2m. So what we have just reached is that the difference between two terms of this sequence is always greater than 1/2. This number comes out to be 1/2. तो Cauchy convergence principle जो है वो वैलिड नहीं है. जब वो वैलिड नहीं है तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर सकती. The only point was this, जिसमें साद ने करेक्शन कराई, and we wanted to according to Cauchy convergence principle, we wanted to have this, but we couldn't get this, and we use simple arrangement, and we see that this is greater than half for every m, and Cauchy convergence principle के मुताबिक कुछ less than half होना चाहिए था. So this sequence cannot converge. Okay. There were reciprocals of integers. Here are reciprocals of odd numbers. Exactly the same treatment is done. And this time we have found that this structure, which is taken from Cauchy convergence criteria, is not less than small number, rather greater than 1/4 for every n after this. Epsilon और m कैलकुलेट करके भी दिखा दिए मैंने, and so on and so forth. यहाँ पर रेसिप्रोकल्स थे ऑड नंबर्स के,
यहाँ पे रेसिप्रोकल्स हैं किन नंबर्स के? 1, 4, 7 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये क्या है? n इज इक्वल टू 1 के लिए 1, n इज इक्वल टू 2 के लिए 6 - 2 4, n इज इक्वल टू 3 के लिए 9 - 2 7। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उस हार्मोनिक सम लिया हुआ है मैंने, और इसके लिए भी हमने वैसे ही एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया और ये साबित कर दिया कि डिफरेंस ऑफ S2m and Sm is greater than 1/6. Again, Cauchy criteria is not satisfied, so this is also divergent. हम इन सम्स को सीक्वेंस की टर्म्स कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब ये हम इन्फिनिट सीरीज नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम सीक्वेंसेस भी डिस्कस कर रहे हैं. Another classical problem. I hope and wish that you can understand it yourself, what we have discussed up to now in view of that. So, should I have a break or go straight to 5:30? What, by 5:30? 5:10. I started at 3:30, na? Carry on. Carry on, that's good. पानी पी लो एक गिलास. अगेन एप्सिलॉन और इंटीजर m में रिश्ता यहाँ पे हमने डेवलप किया और एग्जांपल से डिमॉन्स्ट्रेट किया कि एप्सिलॉन चूज करें तो m कितना आएगा, and so on and so forth. A similar problem, and I'll not discuss this, you take care of this yourself. हाँ, मैंने जो एप्सिलॉन चूज किया है उसके अलावा कोई और एप्सिलॉन चूज करने की कोशिश करना. यहाँ पे देखना कि एप्सिलॉन और n का जो रिलेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. So to calculate m, it will be using a quadratic formula. ये तो हम कर चुके थे सर. Okay. Sometimes क्लासिकल मेथड्स में भी आप करते हो, इस सीक्वेंस की लिमिट 0 है. क्लासिकल मेथड में आप क्या करते हो? रैशनलाइज करते हो, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. इसका कॉन्जुगेट क्या है? स्क्वायर रूट n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट n. इससे मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से n प्लस 1 माइनस n, और डिनोमिनेटर में यह आ गया 1/this. And you need this thing to be less than epsilon. Let us wrestle with this. हमने डिनोमिनेटर लिया, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n. अगर मैं 1 प्लस n रेज़ टू पावर हाफ का बायनॉमियल लिखूं तो वो कुछ इस तरह से होगा, और ये इन्फिनिट बायनॉमियल होगा. I hope you remember from your intermediate studies that sorry for the disturbance. मैं ये बात कर रहा था कि 1 प्लस n रेज़ टू पावर अगर इंटीजर होता है तो फाइनाइट एक्सपेंशन होता है, अगर फ्रैक्शन होता है तो इन्फिनिट एक्सपेंशन होता है. तो इसका जो एक्सपेंशन है 1 प्लस n टाइम्स वेरिएबल रेज़ टू पावर n प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल वेरिएबल रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये चलता रहेगा इन्फिनिट प्रोग्राम में. हाँ, n पावर हाफ या एंड पे आएगा, चुनाचे n पावर हाफ और 1 प्लस हाफ n पावर हाफ, अगर इनको मिला लें तो बनता है 1 प्लस 3/2 रेज़ n रेज़ टू पावर हाफ. अगर बाकी टर्म्स छोड़ दें तो दिस इज स्मॉल,
तो इससे ये बड़ा है, ये जो डिनोमिनेटर कंसीडर किया था, इस डिनोमिनेटर से ये स्ट्रक्चर छोटा है। और जब तुम ओरिजिनल स्ट्रक्चर को लोगे, जिसको कि हम कन्वर्ट कर चुके हैं इस फॉर्म में, जो कि इसका रेसिप्रोकल है, तो जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ओरिजिनल बड़ा है तो रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा, एंड दैट विल गिव यू द एप्सिलॉन, एंड चूजिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.01 यू कैन फाइंड n। सो इस एग्जाम्पल में सिर्फ डिस्कस करने की यही चीज़ थी कि 1 + n की पावर फ्रैक्शन हो तो इन्फिनिट एक्सपेंशन होता है, और उस इन्फिनिट एक्सपेंशन में चूँकि सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1, 2, 3 टर्म्स उठाएंगे जो कि ये इस इन्फिनिट एक्सपेंशन का हिस्सा नहीं है, ये अलग से था। तो ये बड़ा है और ये 3 टर्म्स का सम छोटा है। रेसिप्रोकल में ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। So this original Sn, nth term of the sequence is less than epsilon. For what n? तो ये हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। एप्सिलॉन की वैल्यू रखी और इसको n के लिए सॉल्व कर दिया। n/n+1 क्लासिकली इसकी लिमिट जो है 1 आती है, और हम यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन और इंटीजर के दरमियान रिलेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। That was first part of the sequence problems, and let me look at the second part कि कोई खास चीज़ सामने आती कि नहीं आती। Okay, let us look at this example. Here, we are considering more and more complicated form of term of a sequence. A term of a sequence is made up of what? Reciprocals of the squares of integers. And integer starts from where? N is equal to 1 का मतलब 1/2 square, 1 + 1/3 square plus 1/4 square up to 1/2n। यानी अगर n is equal to 2 हो तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 2 टर्म्स आएंगे, 2 + 2 तो खत्म होगा यानी 2n पे। अगर n is equal to 3 हो तो 3 टर्म्स आएंगी, कहाँ खत्म होगा? 1/3 + 3 पे। So general term of the sequence is this. Again, we have used that every term replaced by 1/n square. So 1/n square is now n is greater than n+1, but the reciprocal will be have the reverse. Sorry, n is equal to less than n+1, but the reciprocal will be 1/n is greater than 1/n+1, and so the squares. So every term replaced by 1/n square, that makes n into 1/n square, and that makes 1/n. So every term of the sequence is less than 1/n. So Bn ये उल्टा लिखा हुआ है क्या? n is less than n+1. I've lost track of something. Okay, here we consider n. Now we are considering 2n. Now we are considering 2n. तो n जो था वो तो n+1 से छोटा था, रेसिप्रोकल में 1/n बड़ा हो गया। इसी तरह 1/2n, 2n जो है वो n+1 से बड़ा है, लेकिन रेसिप्रोकल में छोटा हो जाएगा।
and that makes n terms into 1 upon 4n square, and we see that Bn is greater than 1 upon 4n. Now what we reach, what result we reach? Number 1 says that the general term is less than or equal to 1 upon n. 2 says the general term is greater than 1 upon 4n. And 1 and 2 combined, Bn is lying between 1 upon 4n and 1 upon n. Now this is a comparison of 3 sequences. One sequence is 1 upon 4n. One sequence is 1 upon n. And one sequence is our sequence that we are testing. When I take the limit of this, it goes to 0. 1 upon 4n, इसकी limit भी 0 है, 1 upon n की limit भी 0 है. So we have a sandwich theorem that was there in the study of calculus also. और चूँकि sequence भी functions है, तो जो sandwich theorem calculus में इस्तेमाल की वो यहाँ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. This sequence goes to 0, this sequence goes to 0. A sequence that lies in, as far as size is concerned, in between these two sequences should also go to 0. So this way, we have proved that sequence is going to 0. That is, converges to 0. Some more problems. जो कुछ मैंने आज डिस्कस किया है, as far as techniques are concerned, in proving these questions, whether sequence converges or diverges or sequence cannot converge, एक ही तरह की टेक्निक इस्तेमाल की हुई हैं. लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि ये मैं शेयर कर दूँगा. इसमें से कुछ फाइल शेयर कर चुका हूँ मैं, कुछ कर दूँगा. So you can go through these problems yourself. हाँ, I would prefer to discuss Cauchy's first theorem on limits. Proof is optional. If anyone is interested in the proof, go and find the proof. मैं इस theorem का जो extract है, इसका जो use है, वो in problem solving वो डिस्कस. इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल्स किए उसमें टेक्निक्स बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स नहीं थी, सिंपल टेक्निक्स थी in comparison to sequences which cannot be dealt with those simple techniques. Cauchy's first theorem on limit says कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट L है, यानी कोई सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रही है, तो मैं एक ऐसी सीक्वेंस बनाऊं जिसके डिनोमिनेटर में तो n है, न्यूमरेटर में इसी सीक्वेंस के फर्स्ट n टर्म्स का सम हो. यानी अगर n मैं 4 लूँ तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डिवाइड बाई 4 हो. 5 लूँ तो a1 से लेके a5 तक का सम डिवाइड बाई 5. तो अब ये नई सीक्वेंस बनी है. ये थ्योरम कह रही है कि उसकी लिमिट भी L ही होगी. इसका मतलब है कि अगर मुझे इस फॉर्म में कोई कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस दी हुई है और मुझे उसकी लिमिट निकालनी है, तो इसकी जो जनरल टर्म है an, उसकी लिमिट निकाल लो तो इस कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस की लिमिट आ जाएगी. एंड वी इमीडिएटली डिमॉन्स्ट्रेट दैट, हम ये प्रूव करें कि इस सीक्वेंस की जिसकी nth टर्म जो है वो इस तरह के इररेशनल नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम है, वो लिमिट 1 होगी. चुनाचे सबसे पहले तो हम इसमें ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कोई kth टर्म क्या हो. डिनोमिनेटर देखो n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 2, n स्क्वायर प्लस 3 चल रहा है. तो मैं कह रहा हूँ kth टर्म जो है वो n स्क्वायर प्लस k है. लेकिन नोट करो कि इसके ऊपर मैंने n डाल दिया, और उसके बाद अगर मैं ये k टर्म थी, इसमें k की जगह n डालूं तो लिमिट क्या आएगी, वो वर्कआउट किया मैंने. k की जगह n डाला, n स्क्वायर प्लस k यहाँ से लिया,
एन ऊपर खुद से डाला, फिर के की जगह एन रख के लिमिट निकाली तो 1 आई। इसका मतलब है अगर मैं ये सीक्वेंस लूँ तो उसकी लिमिट 1 आ रही एन एज एन अप्रोच। अच्छा जनाब, कॉशी थ्योरम ऑन लिमिट्स कह रहा है कि जो सीक्वेंस की लिमिट मैंने 1 निकाली है, अगर उसको मैं ऊपर उसका सम ले लूँ और डिवाइड बाई एन कर दूँ तो क्या होगा। तो ये जो सीक्वेंस की टर्म्स थी वो एक्चुअली ये थी और डिनोमिनेटर में एन है, तो डिनोमिनेटर में एन और मैंने जो सीक्वेंस बनाई थी वो ये बनाई थी। तो नाउ नोट दैट कि मैंने ऊपर एन क्यों रखा था और फिर k इज इक्वल टू एन लेके इसकी लिमिट निकाली और 1 निकाली। तो जब मैंने इस स्ट्रक्चर में जिसमें डिनोमिनेटर में n है, न्यूमरेटर में a1 प्लस a2 प्लस a3 और a1 प्लस a2, ये a's आर डिफाइंड बाय दिस, ये इसके अंदर रखे तो न्यूमरेटर का n कैंसिल हो गया, इसकी लिमिट 1 थी और कॉची लिमिट थ्योरम कहती है इसकी लिमिट भी 1 होगी। सो वी हैव गॉट द लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 आफ्टर n cancel out throughout in this nth term of the sequence. Now we have to show that this limit is 0. Again, kth term is 1 upon n. So a n 1 upon n की लिमिट जो है हमें पता है कि 0 है। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अपॉन n यानी 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस सो ऑन अप टू अपॉन n, ये भी 0 हो। So Cauchy limit theorem give us a technique in this way to find the limit of more complicated sequence using less complicated sequence. This is a more complicated sequence. This is only one term in the numerator of this sequence. अगर मैं इसकी लिमिट निकाल लूँ तो इस कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस की लिमिट उसी के बराबर होगी एंड दैट इज द मैसेज ऑफ Cauchy's first theorem on limits. लेकिन सर हमें पहले वो कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस जैसी कोई ना कोई सीक्वेंस ढूंढनी पड़ेगी ना, जब जाके हम इस टाइप की कर सकते हैं। वही इन एग्जांपल्स में डेमोंस्ट्रेट किया गया कि कैसे किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हियर हमने ये न्यूमरेटर की टर्म्स बनानी पड़ी, ये सीक्वेंस थी, इसको इस शक्ल में लाना है हमको। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। अगर नीचे n है तो इनमें से हर एक के ऊपर n डाल के देखना है कि यार ये सीक्वेंस जो है इसकी लिमिट क्या है, तो उसकी लिमिट निकल आई। लिहाजा हमने इस सीक्वेंस के अंदर जो सम में एक टर्म आ रही है उसके ऊपर n का इजाफा करके फिर लिमिट निकाली। यानी ये जो है वो एग्जैक्टली ये नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an के नीचे n नहीं था, लिहाजा वो n हमने लगा के सिंपल सीक्वेंस बनाई। जबकि यहाँ पे n पहले से मौजूद है डिनोमिनेटर में, तो सिंपल सीक्वेंस जो है वो यहाँ डायरेक्टली अवेलेबल है, लिहाजा ये प्रॉब्लम ज़्यादा सिंपल है। अगेन इस वाले प्रॉब्लम में ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, होल डिवाइडेड बाई n, तो वो n तो है नहीं, तो वो n मैंने इस ये जो सम के टर्म्स हैं इनमें न्यूमरेटर में n लगा के वो बनाया और देखा कि इसकी लिमिट निकल आई 0 है लिमिट, तो बस फिर ये है सीक्वेंस की टर्म, सिंपल सीक्वेंस की टर्म। ये ऊपर डाली डिवाइड बाई n, तो ऊपर वाला n कैंसिल हो गया, ये ओरिजिनल सीक्वेंस की टर्म आ गई। और चूंकि सिंपलर सीक्वेंस की लिमिट 0 थी, लिहाजा ये कॉम्प्लिकेटेड सीरीज सीक्वेंस की लिमिट भी 0 है। सही है सर। अच्छा जनाब, इसी तरह का एक रिजल्ट जो है वो ये है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जिसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, सारे लिमिट भी पॉजिटिव होगी,
और अगर उसकी लिमिट एल है तो इस सीक्वेंस की टर्म्स की ज्योमेट्रिक मीन अगर लूँ मैं और उससे सीक्वेंस बनाऊं तो उसकी लिमिट भी एल वही होगी जो कि ओरिजिनल सीक्वेंस की। चुनाचे लेट अस क्विकली सी, प्रूफ इज ऑप्शनल। मैं जितना सीक्वेंस के आइडियाज आपको पढ़ाना चाह रहा था मैं पढ़ा चुका हूँ। प्रॉब्लम्स जो आज डिस्कस कर रहा हूँ और प्रॉब्लम के दरमियान जो कुछ थ्योरम्स का जिक्र कर रहा हूँ वो यूटिलिटीज़ हैं, वो सपोर्ट सिस्टम है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की सीक्वेंस जो हमारे सामने आती हैं उनकी हम लिमिट कैसे निकालें या उसको कन्वर्जेंस कैसे शो करें। तो यहाँ बात हो रही है कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एल है और उस सीक्वेंस की टर्म्स से ज्योमेट्रिक मीन्स की सीक्वेंस बनाएं। आई होप यू रिमेंबर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक मीन। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ए इंटू बी होल रेज़्ड टू पावर 1/2। ए बी सी का ज्योमेट्रिक क्या होता है मीन? A into B into C की होल पावर 1/3। हाँ, आई डोंट नीड टू राइट इट डाउन। हाँ, सो यू नो दैट। तो ज्योमेट्रिक मीन्स की सीक्वेंस अगर बना दिया है तो उसकी लिमिट भी वही होगी जो ओरिजिनल सीक्वेंस की है और उसका इस्तेमाल 2 into 3/2 into 4/3 into 4/3 into 5/4 होना चाहिए था ये जो है ना ये the sequence is defined by numerator is 1 larger than the denominator, whole raised to power 1/n। हमने ये शो करना है कि इसकी लिमिट 1 है एज एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी। तो भाई इसमें जो इंडिविजुअल टर्म है यहाँ पे n+1/n, इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट 1 है, लिहाजा इस ज्योमेट्रिक मीन की लिमिट भी 1 है। सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस थ्योरम। Okay, I hope you remember this limit 1+1/n raised to power n is base of natural law। लेकिन हमने इसको प्रूव करना है। यहाँ इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? नहीं, मैंने असल में इसमें क्वेश्चन उतारा नहीं और सॉल्यूशन शुरू कर दिया। क्वेश्चन ये था कि ये साबित करें, ये लास्ट लाइन है रिजल्ट कि 2 into 3/2 स्क्वायर into 4/3 क्यूब into 5/4 raised to power 4 n+1/n raised to power n whole raised to power 1/n ये सीक्वेंस है और कहा गया था कि ये प्रूव करेंगे ये इसकी लिमिट बेस ऑफ नेचुरल लॉ। तो हमने इंडिविजुअल टर्म उठाई और इंडिविजुअल टर्म के बारे में हम पहले से जानते हैं कि इसकी लिमिट बेस ऑफ नेचुरल लॉ है। तो हमारी रिसेंट थ्योरम जो है उसकी वजह से इस an से बनने वाली जो ज्योमेट्रिक मीन्स की सीक्वेंस है उसकी लिमिट भी वही होगी जो कि इंडिविजुअल टर्म सीक्वेंस की लिमिट। ओके, इफ a sequence is positive monotonic decreasing term, a limit L है, this also converges to L. It's sort of generalization of this problem, monotonic decreasing sequence, symmetric mean। ये छोटा सा रिजल्ट जो है ये
जहन में रखने का है। और यहाँ पे असल में UN+1/UN इंट्रोड्यूस किया है हमने इसी मकसद के। Cesaro's theorem, proof not required। ये कहता है कि अगर एक सीक्वेंस ए पे कन्वर्ट कर रही है और एक सीक्वेंस बी पे कन्वर्ट कर रही है तो फिर ये स्ट्रक्चर से बनने वाली सीक्वेंस क्या स्ट्रक्चर कैसा है? फर्स्ट टर्म ऑफ ए एन टर्म ऑफ बी, सेकंड टर्म ऑफ ए एन माइनस वन टर्म ऑफ बी, थर्ड टर्म ऑफ ए एन माइनस टू टर्म ऑफ बी, up to nth term of A into first term of B whole divided by n. इसकी limit A into B. This is again a tool for solving some of the problems. And Cauchy's second theorem of limits is in fact based on what we just mentioned here कि इस छोटा सा रिजल्ट जो है वो इस सेकंड थ्योरम का पार्ट है कि अगर U n कोई सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी UN+1/UN की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो दैट मीन्स UN इज कन्वर्जेंट, UN पावर 1/n इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, UN+1/UN has the same limit as UN raised to power 1/n. Again, this is providing us further tools. And the last one is कि अगर an+1/an is L and mod L is less than 1, then this sequence has limit 0. If L is greater than 1, then this same sequence will have a limit infinity. Proof not required. Can you suggest what will happen if L is 1? If this limit comes out to be 1, अगर mod of the limit is less than 1 तो इस सीक्वेंस की लिमिट 0 है, अगर L is greater than 1 इस सीक्वेंस की लिमिट इंफिनिटी है, इन बिटवीन है L is equal to 1. Can you figure out if L is equal to 1 what should be the limit of this? चलो सोचना, और ऊपर नीचे जो हमने रिजल्ट दिए हैं उनको सामने नजर में रख के सोचना. So some more complicated sequences. असल में ये सारी सीक्वेंसेस डिस्कस करने का एक मकसद ये भी है, ये प्रॉब्लम डिस्कस करने का मकसद ये भी है कि इन्फिनिट सीरीज की जो स्टडी है उसमें जो इश्यूज आते हैं, उसमें जो थ्योरम्स आती हैं, हम अपना जहन बना रहे हैं. वी आर लर्निंग थिंग्स, वी आर लर्निंग द लैंग्वेज, we are learning how to put logic into mathematical language. So infinite series को समझ सकते. I don't think I'll go beyond next class for studying this sequence of series at this level. In an advanced course, you will be exposed to more advanced ideas up to other subjects like summability theory and advanced real analysis, or as people call a more advanced course as mathematical analysis. By the way, जो किताब है मालिक की, उसका भी टाइटल mathematical analysis. People sometimes remain confused about real analysis और mathematical analysis में क्या फर्क है. मैंने शुरू में बताया था कि रियल एनालिसिस जो है इट्स एडवांस कैलकुलस, बट कैलकुलस के बारे में हमारे ध्यान में होता है, वहाँ तो हम डिफरेंशिएबिलिटी कंसीडर करते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात होती है, और हमने रिव्यू में बहुत सारी चीज़ें रिव्यू की थी, डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शंस की लिमिट, कंटिन्यूटी वगैरह की. तो
और हमने यहाँ आके उस एडवांस कैलकुलस में सीक्वेंस एंड सीरीज के मोर डीप आइडियाज जो है वो इंट्रोड्यूस किए। यस, कैल 1, कैल 2, कैल 3 में सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया जाता है। आई डोंट नो द काइंड ऑफ डेप्थ आई हैव कंसीडर्ड। तुम लोगों ने इससे पहले देखी है इतनी डेप्थ इन द स्टडी ऑफ सीक्वेंसेस? नो सर। मतलब एक डीपर concepts and deeper ideas in the study of sequences and series, they are essential part of real analysis. A major link is the idea of limit point, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जिसका आप टेस्ट भी दे चुके, क्विज भी दे चुके हैं, असाइनमेंट में भी दिया था वो। लिमिट पॉइंट और किसी भी सेट के खास पॉइंट्स जो हैं, तो यहाँ जो मेजर लिंक है वो लिमिट पॉइंट। हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस कह रहे हैं, हमने कहीं भी लफ्ज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस कहा। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये मैं फाइल शेयर कर दूंगा, इसमें जो प्रॉब्लम्स मजीद डिस्कस हुए हुए हैं 2-4 ही रह गए। क्या कहने लगा था मैं यार, लिमिट पॉइंट कर लो। देखो, जब मैं सेट का लिमिट पॉइंट डिस्कस कर रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि नेबरहुड ऑफ L contains at least one point. The related neighborhood of L, 0 is less than xn minus L less than delta, contains at least one point of S. अब पता नहीं S कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक S, इसमें थोड़े से पार्ट हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1 पॉइंट का मतलब अल्टीमेटली ये आ जाता है कि दिस नेबरहुड कंटेन्स इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स। और फिर हम बुल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम तक जाते हैं कि अगर एक बाउंडेड इन्फिनिट सेट है, बाउंडेड infinite set has at least one limit point. मैं जो इस वक्त कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, मैं इस वक्त इसी तरह की नेबरहुड बना रहा हूं, और यहां मैं कह रहा हूं सीक्वेंस की टर्म्स, सारी की सारी सीक्वेंस टर्म अंदर होंगी, बाहर थोड़ी सी होंगी। मगर सेट के लिए हमने ये नहीं कहा था, क्योंकि सेट के मल्टीपल लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस में एक ही लिमिट होनी चाहिए, मगर ये लिमिट पॉइंट है कि नहीं है? एनी आइडिया? सर अगर हम उसके एक एप्सिलॉन बनाएं और अगर उसके अंदर वो एग्जिस्ट करती हो तो मतलब लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। देखो, मेरा जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि लिमिट पॉइंट जो है वो सेट का है, क्या सीक्वेंस सेट है? हाँ? सेट ही हुआ ना सर? No, sequence is not a set. Sequence is a function. अच्छा। हाँ. So, and function should have a graph. The domain of the function is positive integers. What are the images? S1. S1 may be somewhere here. S2 may be somewhere here.
S3 may be somewhere here, S4 somewhere here, blah 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 blah. ठीक है, मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल S1 जो है वो y एक्सिस पे बनाया हुआ है, S2 जो है वो y एक्सिस पे बनाया हुआ है, S3 जो है वो y एक्सिस पे बनाया हुआ है। इसका मतलब है मैं जो फिगर बनाया करता हूँ सीक्वेंस की टर्म, इन सब को प्रोजेक्ट करो y एक्सिस पे और उस y एक्सिस को लिटा दो। अब मैं कह रहा हूँ S1 ये है, S2 ये है, S3 समवेयर हियर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो पहली बात तो ध्यान में रख लो कि सीक्वेंस और सेट में फर्क है। लिमिट पॉइंट जो है वो सेट का है, ठीक है। सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी असल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये होनी चाहिए। उस ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में सीक्वेंस एज अ फंक्शन डिस्क्रीट ग्राफ होगा और जो पॉइंट्स ग्राफ पे हैं उनकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ले लें, तो हम वो बना रहे हैं सब। जब भी हम लाइन बनाते हैं और हम कहते हैं भाई ये हमने जनाब बनाई लाइन और हमने कहा जी ये सीक्वेंस इस पे कन्वर्ज कर रही है, तो दरअसल हम वाई एक्सिस बना रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। सो लिमिट की सीक्वेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम खासतौर पे कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, यूनिक लिमिट। लेकिन जब हम सेट के लिमिट पॉइंट्स की बात करते हैं तो हमने कभी सेट के लिमिट पॉइंट को यूनिक नहीं कहा। और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमने देखी और हमने देखा कई अक्सर सेट, एनी सेट फॉर एग्जांपल और सेट, अबे उल्टा, फॉर एग्जांपल मैंने सेट लिया 3 2 4, आपको याद होगा अच्छी तरह से, एवरी पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट। एक लिमिट पॉइंट ऐसा है जो कि सेट का पॉइंट नहीं है, तो लिमिट पॉइंट इज अ डिफरेंट आइडिया। अगर मैं चाहूं कि लिमिट पॉइंट को और सीक्वेंस के लिमिट को कंपेयर करो, तो अब जरा एक देखो, 1 1 1, ये क्या लिखा है मैंने? इज इट अ सीक्वेंस और अ सेट? सेट। ब्रैकेट नोटेशन तो कह रहा है कि सेट है, लेकिन सेट में क्या एलिमेंट कभी रिपीट करते हो? नो सर, नहीं करते ना। तो दैट इज एन इंडिकेशन कि भाई ये सेट नहीं है। ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ठीक है। इसका मतलब मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा तो 1 पे भी इमेज 1 है, 2 पे भी इमेज 1 है, 3 पे भी इमेज 1 है। तो ये चीज जो है इसकी नोटेशन में इस्तेमाल करता हूं, ये n इज इक्वल टू 1 to infinity। एक है इसका इमेज सेट, ये सीक्वेंस है। इमेज सेट क्या है इस सीक्वेंस का? इमेज सेट जो है दैट कंटेन्स ओनली 1 पॉइंट, क्योंकि जब भी तुम n इज इक्वल टू 1 के लिए भी 1 है, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी 1 है, n इज इक्वल टू 3 के लिए भी 1 है, हर टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 1। तो जो y एक्सिस पे जो बन रहा है ये सिर्फ एक पॉइंट बन रहा है ना, तो इमेज सेट जो है वो तो 1 है। अब बताओ इस इमेज सेट का लिमिट पॉइंट है? You have to go back into the study of limit point and एक किसी सेट का लिमिट। बुल्जानो-वाइसरास थ्योरम जिसका भी मैंने दोबारा जिक्र किया था, उसको उसने कहा था कि कम से कम एक लिमिट पॉइंट किन कंडीशंस में होगा? सेट बाउंडेड हो, इनफाइनाइट। ये सेट बाउंडेड है लेकिन इन्फिनिट नहीं है, जी जी। तो इसका कोई लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता।
सो एज इमेज सेट इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, बट एज ए इमेज सेट ऑफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू वन, सीक्वेंस की लिमिट है। दिस इज वन बारीक पॉइंट जो अक्सर बेशतर बिगिनर्स जो हैं वो मतलब वो इसकी उनकी तवज्जो नहीं जाती इस तरफ कि सीक्वेंस की लिमिट और लिमिट पॉइंट इनमें बहुत बड़ा फर्क है। A sequence can have a limit just like this. Sequence has a limit, but the image set corresponding to this set, this sequence, has no limit. It's not possible to have a limit because its image set is finite. और जब तुम उस पे आ जाते हो -1 raised to power n, अब ये एज ए सीक्वेंस क्या है, -1 1 -1 +1, ठीक है। सीक्वेंस तो ये है, इमेज सेट क्या है, -1 1 -1 1। इमेज सेट की का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, राइट? यस सर। Image set has no limit point, but the sequence has two limit points. A sequence has two limits, not limit points. Sequence has two limits, 1 and -1. The sequence is not converging, that is something else. क्योंकि कन्वर्जेंस के लिए हमने कहा है कि सीक्वेंस की एक ही लिमिट होनी चाहिए, राइट? तो जनाब हाँ, इमेज सेट कभी मतलब इनफिनिट तक नहीं जा सकता क्या? दोबारा बोलो। लाइक हमारा इमेज सेट फाइनाइट है इस केस के हाँ, अंदर। मैंने एग्जांपल इस वक्त वो वाली ली ना जिससे कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसका फर्क वाज़ेह कर सकूं। और जो तुम कह रहे हो I have considered this as a set in the previous chapter. In this chapter, Yes. this can be considered as a sequence. This is considered in the previous set as a set, right? और इस चैप्टर में मैं इसी सेट को सीक्वेंस के तौर पे कंसीडर कर सकता हूँ। और कैसी सीक्वेंस? जिसकी डोमेन n है और रेंज 1/n. This is written as a point on the xy plane. अगर ये इंटीजर 4 है तो corresponding to this, so this point as a graph of the sequence has coordinates this. तो ये अब सीक्वेंस की इमेजेस जो हैं लिखी हुई हैं ये, and they geometrically are placed here on the y-axis. 1, 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/, and so as a graph, this graph is going from here to 1/2 to 1/3 to 1/4 to 1/5 1 to 1/6. मैं इनको मिला नहीं सकता because sequence as a function has domain only integers, right? So ये point सब separate points हैं और इनकी images on y-axis को मैं बनाता हूँ इस तरह से, वैसी जैसे सेट की बनाई थी। Now this set has one limit point which is 0. That limit point of this set, when considered as a sequence, is the limit of the sequence. तो पहले तो मैंने कंट्रास्टिंग एग्जांपल ली थी जिसमें इमेज सेट जो सीक्वेंस का था वो फाइनाइट था। अब इमेज सेट इन्फिनिट है और इत्तेफाक से इस एग्जांपल में जो सेट के तौर पे लिमिट पॉइंट आ रहा है वही सीक्वेंस के तौर पे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस आ रही है, राइट? बट देयर कैन बी अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। द पॉइंट इज ओनली टू मेक यू रियलाइज, अपने दिमाग में घुसा लो ये चीज कि लिमिट पॉइंट इज एन आइडिया, अ कॉन्सेप्ट peculiar particularly for sets. जब भी तुम किसी स्ट्रक्चर को एक सेट के तौर पर कंसीडर करते हो फिर तुम लिमिट पॉइंट की बात करते हो। सो सीक्वेंस इज नॉट अ सेट। हाँ, सीक्वेंस का इमेज सेट जो है, मैंने फाइनाइट इमेज सेट्स भी दिखा दिए, इन्फिनिट इमेज सेट भी दिखा दिया। फाइनाइट सेट है, बुल्दानो कह चुका कि भाई फाइनाइट सेट की तो लिमिट होगी, हो ही नहीं सकती।
कम से कम एक लिमिट होने की शर्त यह है कि सीक्वेंस सेट इन्फिनिट हो और बाउंडेड हो। लेकिन ये उसने नहीं कहा कि अगर सेट इन्फिनिट है और बाउंडेड नहीं है तो आपको लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ये कहा है कि अगर एक सेट बाउंडेड और फाइनाइट बाउंडेड और इन्फिनिट है तो कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। तो लिमिट पॉइंट के इश्यूज जो हैं वो ऑफ ए सेट के इश्यूज मुख्तलिफ हैं, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस के इश्यूज मुख्तलिफ। With that, I think I stop. You see that I have here at the top infinite series 1, infinite series 2, infinite series exercises. I will like to go through these three. Can you see at the top of the screen PDF files opened? Yes, sir. So infinite series 2, इसमें मैं concept discuss करूँगा और infinite series. I hope I will try to complete a discussion on these three next time. इरादा कुछ होता है, हो कुछ जाता है। मैं इस वीक में चाहता था कि मैं इन्फिनिट सीरीज इन्फिनिट सीरीज से बाहर आ जाऊं, so that next I start with functions and more advanced issues. लेकिन पिछली क्लास I was not really feeling well. कल भी क्लास में भी मैं मेडिकल वालों को पढ़ा रहा हूँ और अब आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि किसी दिन अगर मेरी हिम्मत हुई रात के वक्त किसी वक्त तो मैं जूम सेशन आप लोगों को बता दूंगा कि मैं इस वक्त कर रहा हूँ जूम सेशन। अभी भी 6-7 स्टूडेंट आज की क्लास में थे, बाकी सारे के सारे रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो मैं किसी वक्त मुझे मौका मिला कल परसों या इतवार को किसी वक्त मैं इन्फिनिट सीरीज पर एक लेक्चर कम से कम 1-1.5 घंटे का जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ। टाइम बता दूंगा किस वक्त कर रहा हूँ, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर जाहिर है कि उसको मैं शेयर तो करूँगा। ओके, with that I think I have gone straight 1 hour 40 minutes 100 minutes. That's nice. तो मैं अब रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ।